Hello students, welcome you all. Today we are going to start with our 10th chapter, that is circles. Yes students, today we are starting with our 10th chapter of our math section, that is circles, which is of geometry section. Okay, let us start this chapter. Before starting some important topics of this chapter, let us study some basic definitions of this chapter. Okay, what is the basic definitions? The first definition is the circle itself. What do you mean by a circle? A circle is a shape with all points at the same distance from its center. You can see students, there is a fixed point which is center O. From that fixed point, there are some points, set of points which are equidistant from this fixed point. Okay, ये जो सारे set of points जो एकदम round shape में है, okay, which are equidistant from this center O. Equidistant मतलब at equal distance, and that equal distance is called what? It is called radius. Okay, so from center O, there are some set of points which are at equal distance, and those set of points are combinedly called a circle. Okay, and that fixed point is called the center of the circle, and that fixed distance from the center to the circle, that fixed distance is called the radius of the circle. You can even define the radius as a line segment. A line segment joining the center of a circle with any point of a circle is called the radius. Now circumference. Circumference means what? It is the distance around the circle. पूरे जो सर्कल का लेंथ है, द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफरेंस. ओके, नाउ व्हाट इज द डायमीटर? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. ओके, हियर यू कैन सी दैट द लाइन सेगमेंट BE, B and E are the points of the circle, points on the circle, and this BE line segment is passing through the center of the circle, so it is called the diameter of the circle, and we all know that diameter is twice of its radius. Okay students, so these are some basic definitions. Now let us go for the main definition which you have to study in this chapter. Okay, the first definition which you have to study is a secant. What do you mean by a secant? A secant is a line that intersects a circle in 2 points. You can see that there is a line K. There is a line K which is intersecting the circle at 2 distinct points. Okay, इस line K ने circle को 2 points पे intersect किया है. So this line is said to be a secant. Are you getting students? So what is a secant? A secant is a line that intersects a circle in 2 distinct points. So here line K is a secant because it is intersecting the circle in 2 points. Okay, now comes the main definition, that is a tangent. What do you mean by a tangent? A tangent is a line in the plane of a circle that intersects the circle in exactly 1 point. Okay, a tangent is a line which intersects the circle at exactly 1 point. आप देख सकते हैं कि there is a line J which is intersecting the circle at exactly 1 point. Okay, so this line J is called the tangent to a circle. First of all, the circle and line should be in the same plane. What is a plane? Your paper, page of your notebook or our blackboard, these are all what? A plane. Okay, so if a line and a circle are lying in the same plane and the line is intersecting the circle at exactly 1 point, okay, then that line is called a tangent to the circle. Okay students, I hope you understood both the definitions, secant and tangent. Secant intersects the circle in 2 points and tangent intersects the circle at exactly 1 point, and that point where the line is touching the circle, that point is called point of tangency. What is it called? Point of tangency. ये लाइन J ने जिस पॉइंट पे टच किया सर्कल को, that point is called point of tangency. Okay students, here now let us discuss theorem 10.1. We will discuss the statement of this theorem. What is the statement? If a line is tangent to a circle, if a line is tangent to a circle, then it is perpendicular to the radius drawn to the point of tangency. This point of tangency is also known as point of contact. हमारे टेक्स्ट बुक्स में इसको point of contact बोलते हैं. Okay, so what is the statement in our textbook, theorem 10.1? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius drawn through the point of contact.
So here you can see that there is a circle with center Q. There is a circle with center Q and PQ is the radius. And this line L is tangent to the circle at point P. So P is your point of contact, or you can say that P is the point of tangency. So according to this theorem, if L is tangent to the circle, then this radius PQ is perpendicular to the line L, that is tangent L. This tangent is perpendicular to the radius. ओके याद रखना कि अगर कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल को टेंजेंट है तो वो जो रेडियस है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस गिर रहा है वो रेडियस और वो लाइन टेंजेंट लाइन दे बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, if there is a line L which is a tangent to a circle and P is the point of contact and Q is the center of a circle, then this line L is perpendicular to what? QP, that is radius. Means tangent line and radii are both perpendicular to each other, where at the point of contact. Okay students, so this is your theorem 10.1. Now let us discuss the converse of theorem 10.2. 10.2 theorem 10.1 10.1 theorem में जो हमने देखा था उसका converse theorem है आपका theorem 10.2. What was there in 10.1 theorem? That if a line L is tangent to a circle, then that line L will be perpendicular to the radius drawn to the point of contact. अभी उसका converse, that if there is a line L, आपको पता नहीं है कि वो tangent है कि नहीं है. If there is a line L in the plane of a circle, okay, and if it is given that that line L is perpendicular to the radius QP at the point of contact P, okay, if it is given that सामने से ये दिया गया है कि that line L is perpendicular to the radius drawn at the point of contact, then this line L will be the tangent to the circle at point P. L is the tangent to the circle at point P. I hope you understood. ये उसका कॉन्वर्स है. उसमें क्या था कि अगर L टेंजेंट है तो वो रेडियस को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब यहाँ पे उल्टा, दैट कि अगर L कोई लाइन है जो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर में है, देन दैट लाइन L विल बी द टेंजेंट टू दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P. Okay, I hope you understood. It is the converse theorem of theorem 10.1. Okay students, now let us discuss exercise 10.1 of our NCERT textbook. Now students, let us start with our exercise 10.1. Okay, what is our first question? Our first question is, how many tangents can a circle have? How many tangents can a circle have? So since students, a circle have infinitely many points. Circle बनता किससे है? By joining infinitely many points. तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकता है. तो सर्कल में है ही इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स, तो उसके टेंजेंट्स भी क्या होंगे? हर पॉइंट पे एक एक टेंजेंट, तो इट हैज़ इन्फिनाइटली मेनी टेंजेंट्स. सो द आंसर इज अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइटली मेनी टेंजेंट्स. बस आपको एक ही सेंटेंस लिखना है, यू डोंट हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन. So what is the question? How many tangents can a circle have? A circle can have infinitely many tangents. Actually, a circle is a collection of infinitely many points equidistant from a given point, and through every point on the circle there is a tangent to the circle. क्योंकि सर्कल में है ही इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स और हर पॉइंट पे एक एक टेंजेंट होगा, सो अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइटली मेनी टेंजेंट्स. आपको सिंपल एक ही लाइन में आंसर देना है. नाउ क्वेश्चन 2. Question 2 is fill in the blanks. So what is the first blank? A tangent to a circle intersects in it in dash point. Point या points. So we all know that a tangent to a circle intersect it in only one point. है ना? Tangent का मतलब ही क्या है? A line which intersects the circle at exactly one point. Okay, तो आंसर क्या आएगा? Only one point या exactly one point. You can write only one or exactly one point. I hope you understood. A tangent to a circle intersects it in only exactly one point. Okay students, now second blank. Second blank is a line intersecting a circle in 2 points is called a, we all know students, हमने definition देखा ना, that a line intersecting a circle in 2 points is called a secant. ओके, अगर एक पॉइंट पर टच करता है तो वो टेंजेंट है, एंड इफ इट इज इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स देन इट इज कॉल्ड अ सेकेंट. ओके, नाउ थर्ड ब्लैंक. अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स
है ना, एट मोस्ट। वाई यू कैन सी स्टूडेंट्स कि अगर आप सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ और आपको एग्जैक्टली पैरेलल टेंजेंट चाहिए तो एक्चुअली क्या होंगे, आपको 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स मिलेंगे और कोई थर्ड लाइन नहीं मिलेगा जो उन दोनों को पैरेलल हो। ओके, एंड दोज 2 पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अंडरस्टूड? वो जो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायमीटर मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके, देन कम्स fourth definition: the common point of a tangent to a circle and the circle is called dash. The common point of a tangent to a circle and the circle is called the point of contact. मतलब क्या, टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या है, तो टेंजेंट और सर्कल का एग्जैक्टली एक ही कॉमन पॉइंट होता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय दिस वी finished question 2. There were 4 blanks in question 2. Now question 3. These are all simple questions. I can explain you very easily. What is given? It is an MCQ, multiple choice question है. A tangent PQ at a point P to a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter. Then length PQ is how much? What is given in this question students? That there is a circle with center O. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड पी क्यू इज द टेंजेंट, पी क्यू इज द टेंजेंट एट पॉइंट P, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, और आपको OQ को ज्वाइन करके वो 12 सेंटीमीटर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी ऑल नो दैट सिंस PQ इज द टेंजेंट देन PQ इज परपेंडिकुलर टू OP, है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये जो OP है वो परपेंडिकुलर है PQ को, मतलब P पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। Okay, so in this triangle OPQ, can you see a right angle triangle OPQ? Here angle P is 90 degree. So we can easily apply Pythagoras theorem, है ना. What is Pythagoras theorem? OQ square, hypotenuse का square, OQ square equal to PQ square plus OP square, बाकी दोनों sides के square को plus कर दिया. I hope you understood Pythagoras theorem students. Okay, hypotenuse का square means OQ square equal to PQ square plus OP square. नाउ व्हाट इज OQ स्क्वायर, 12 स्क्वायर, क्योंकि हमको OQ कितना दिया हुआ है 12, 12 स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर हमको ढूंढना है, प्लस OP स्क्वायर, OP इज रेडियस, सो रेडियस इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर, तो इट इज़ 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाओ बाजू वाले साइड में, 12 स्क्वायर इज हाउ मच 144 और 5 स्क्वायर 25 होता है, उसको अंदर ले लिया हमने तो कि LHS में, तो इट इज़ -25, 144 - 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर कितना मिला, 144 - 25 इज 119। सो अगर आपको PQ स्क्वायर 119 है तो इफ़ यू वांट PQ तो इस तरफ रूट आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाना हो तो उधर रूट लगाना पड़ेगा। सो PQ इक्वल टू √19, 119 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, विच इज़ योर डी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एकदम ईजी है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 4 इज देयर, ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। मतलब क्या, आपको यहाँ पे 3 लाइनें बनाने की है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, देन यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड अ सेकेंड टू द सर्कल। तो आप देख सकते हैं कि एक सर्कल हमने बनाया और M जो है, लाइन M इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल, P इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड लाइन N जो है वो क्या, सेकेंड है। आप देख सकते हैं सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A और B। ओके, तो हियर यू कैन सी दैट द टेंजेंट एंड द सेकेंड दे बोथ आर पैरेलल, और एक तीसरा लाइन आपको बनाने बोल रहे हैं जो इन दोनों को भी पैरेलल हो। तो वी हैव ड्रॉन अ लाइन L हियर, नीचे बना दिया। यू कैन सी दैट ऑल 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, सिंपल था। यू कैन सी व्हाट इज रिटन हियर, हियर L इज अ लाइन, ओके, एंड M and N आर द लाइन्स पैरेलल टू L। M is what? M is the tangent to the circle, है ना, at the point P, and N is the secant to the circle, intersecting the circle at 2 distinct points A and B, and these 3 lines L, M and N are parallel to each other। सिंपल आपको ड्रॉ करना था और ये थोड़ा नीचे एक्सप्लेन कर देने का। I hope you understood students, that's it, all objectives are there in exercise 10.1, so let us proceed further now। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, ओन एग्जाम्पल लिया गया है। व्हाट इज दिस एग्जाम्पल?
point A lies in the exterior of a circle. You can see that point A is outside the circle with center P. Circle का center क्या है? PA and radius 7. A tangent through A touches the circle at B. तो A पॉइंट से आप देख सकते हो टेंजेंट है जो सर्कल को B पे टच कर रहा है. सो B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. So PB will be what? Radii. PB will be radii and PB will be perpendicular to AB because tangent is perpendicular to the radius. Okay, here AB equal to 24 centimeter. मतलब tangent का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर. देन फाइंड PA. तो आपको देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर और नीचे AB आपको दे दिया है कितना? 24 centimeter. So it is very easy to find AP. Why? Because it is a right angled triangle where angle B is 90 degree. So applying Pythagoras theorem, what you will get? PA square. Hypotenuse यहाँ पे क्या है? PA. PA square equal to PB square plus AB square. Now what is PB? That is your radius 7 square plus AB square. AB आपको कितना दिया हुआ है? 24. तो 24 square. So 7 square is how much? 7 sevens are 49 plus 24 square. 24 into 24 is 576. So 576 plus 49 will be 625. So you got PA square as 625. तो अगर आपको PA चाहिए तो उसके बाजू में रूट लगाना पड़ेगा. तो इट इज़ रूट ऑफ 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25. सो हियर PA इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. आपको यूनिट भी लगाना पड़ेगा. इट इज़ 25 सेंटीमीटर. आई होप यू अंडरस्टूड. इट्स अ वेरी इजी सम. सेम सम था जो अपन ने एक्सरसाइज 10.1 में देखा. एक हमने ऑब्जेक्टिव MCQ देखा था. ओके स्टूडेंट्स. Now students, let us learn some more definitions like encircle of a triangle. What do you mean by an encircle of a triangle? A circle inscribed in a triangle. Inscribed मतलब जो triangle के अंदर हो. A circle inscribed in a triangle is called the encircle of the triangle. You can see that this circle touches all three sides of the triangle. Okay. So a circle which touches all three sides of a triangle is called the incircle of a triangle. Okay. Now you can see in a right angle triangle, there is a right angle triangle ABC, है ना? There is an incircle. Okay. There is an incircle which touches all the three sides of the triangle and the center of the incircle is called incenter. The center of the incircle is called incenter and the radii of that incircle is called inradius. है ना? इस सर्कल का सेंटर को हम इन सेंटर बोलते हैं. यहाँ पे I से डिनोट किया गया है और इसके रेडियस को हम इन रेडियस बोलते हैं. सो हाउ टू फाइंड द इन रेडियस ऑफ एन इन सर्कल फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC हो, ये दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली राइट एंगल ट्राइंगल. सो इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, for that how will you calculate the in radius of the in circle? So you can see that for a triangle ABC where angle B is 90 degree, then AC will be the hypotenuse. AC को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस. जो नीचे BC है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस. और AB क्या आपका है? ऑल्टीट्यूड. AB आपका क्या है? परपेंडिकुलर है तो उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं. ओके. सो द फॉर्मूला फॉर इन रेडियस इज ऑल्टीट्यूड प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2. ऑल्टीट्यूड के लेंथ को और बेस के लेंथ को प्लस करेंगे और माइनस पीछे क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूस के लेंथ को और पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे. देन यू विल गेट द इन रेडियस. यस, इट इज AB प्लस BC माइनस हाइपोटेन्यूस AC अपॉन 2 होल अपॉन 2. दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ सर्कल. आर यू गेटिंग? इन सर्कल का इन रेडियस कैसे ढूंढते हैं? इट इज ऑल्टीट्यूड प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस होल अपॉन 2. This is the formula. You should remember this formula. It will be helpful in the next chapters.